family, welcome back to my channel. As promised, Q&A आ गया है and सबके सारे questions में ना सबसे ज़्यादा questions यही थे कि who's Navya? So let me introduce you to Navya. Hi. Hello family, we are back with Q&A. आपके questions, हमारे answers, and without wasting our time, let's start. So the first We selected 28 questions. almost 25 एक दो questions repeat बहुत ही ज़्यादा questions थे and we couldn't figure out space भी नहीं था. So sorry जिनके questions के हम आंसर नहीं दे पाए और जिनके दे पाए वो सुन लो. Okay, first question. So the first question is, you are a lawyer, but why are you not pursuing it? I like question with personal attack. It's because I don't want to. मेरा interest नहीं है. Maybe आगे तुम लोग इसको follow नहीं करते हो, देखते नहीं हो और दूसरे दिन तीसरे इंसान केस करती है और अपनी स्टोरी में धमकी देती है. तुम लोगों को तो पुलिस के पास लेके जाऊंगी. Maybe आगे but not right now. Full time content creation. So उसके बाद question है, your way how to deal with toxic people in your life. Slide into their DMs. Call them. I just do what I do the best. मैं उनसे भी ज़्यादा toxic बन जाती हूँ. Then That's my last stage. No, that is my first stage. पहले ही कैंसर को जड़ से उखाड़ती हूँ मैं पहले First, stage. I try to fix them. I don't. Then they can't fix me. Your opinion on LGBTQ community? झूठ बोल रही है सच. सच बोल रही. Edit कर देगी बोल रही. काट यार वो दोनों ही. पर पहले मुझे समझ ही नहीं आता what's LGBTQ. पहले मुझे लगता था only boys are gay, but then I got to know that even girls are lesbian. I don't blame girls for being lesbians because Men the are toxic. quality of men is reducing day by day. Anyways. If you love somebody, that's good. Doesn't matter gender. Hashtag love is love. So I truly support LGBTQ community because most of my friends are a part of that community. But the thing that I don't believe in is that the pride month they do. I get it. You're trying to make people aware that you have a community, but there are a lot of community. There are a community of singles as well. Sorry, straight people as well. Do you see me marching on the street? Straight man. No, right? So I don't support it. कहने का पता ये है, we support it, but do not overhype it. Yes. Have you guys ever faced an embarrassed moment in public place together? Annie? Many. हम लोग बाहर जा रहे हैं, embarrassing ना हो कुछ. ऐसा. हम घर बैठ के embarrass हो चुके हैं. बैठ के अभी मैं थोड़ी देर पहले we were recording, हमारा face नहीं आया. घर में आ रही थी. 25 मिनट सरकटी 90 और श्वेता. सरकटी श्वेता मेरा तो थोड़ा बहुत आ गया. अभी हाँ चुप स्पेस नहीं है. Embarrassing moment बहुत हुआ है, but I remember the one that we were at opening, like anniversary या opening. हाँ opening था. सब कुछ बता दे जिसके बारे में बिचिंग कर रहे थे. उसमें हम लोग कर्टेन्स में बैठे थे. लाइक ये तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे खूब सारे चूहे कुछ लड़कों को कर रहे हैं पर्दे के पीछे. तब तक इंसान ने ऐसे पर्दा हटा दिया. चुप. And we were like, and that person was asking us how we are, like questions. उसने पर्दा हटा दिया. We were still. We were proud. Moving on to next question. Time नहीं है. Have you ever met, like How you guys met each other professionally or personally? So actually I texted her because I was in Gorakhpur and I had to be here for a really long time and I don't have friends, good quality friends. मेरे सारे friends बकवास थे यहाँ वाले and अच्छे थे वो चले गए. So I had to find new people. मैंने अपना वो बना लिया 2024 का mid motive. तो मैंने इस बंदी को text करा because I saw one of her blogs and I thought our vibes really match. We have the same golden retriever energy. Oh my god, we should really hang out. We have the same energy. ऐसा text करा. And Okay. I said, okay, let's meet. And but उसने हम लोग इसके लाइफ में क्राइसिस चल रहे थे, सब बता गई इसने पहले ही. हम लोगों की मिलने से 15 दिन पहले हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई. We met. We thought कि oh, we knew each other for a very long time. So we felt something like that. पिछले दिनों से Nothing was off fine. कुछ पिछले दिनों से जानते. It was more than vibe. वातावरण. Yeah. So a lot of you have been asking that
how much does Shweta earns from YouTubers की income क्या है? So Shweta. Nothing. अभी नहीं है, but for sure इस month से maybe. And I just started YouTube like in August 2024. तो मेरा तो कुछ ही नहीं है. My channel is not even monetized. One thing that makes you happy and sad at the same time. My life. Efforts I did for somebody. I'm happy that I did that, but I'm also sad that why I did that. So I want to take my efforts back, Navya. What's your dream country to visit? Switzerland. मुझे जाना है. Pakistan. क्या मकसद है आपका? I don't have one yet, but I really want to visit Disney World around the world. मतलब जितने भी Disney के parks हैं. Most funny moment of your life, the funny happen in public places. Most funny moment of your life. हम दोनों का अलग अलग में भी अलग है तो यार बहुत है यार. मेरी लाइफ ही ऐसी है. बट एक टाइम था जब मैं और मेरा फ्रेंड कुत्ता लेके जा रहे थे लाइक पेट्स एंड हमें वो किसी को देने थे एंड वो नौका पे ना बन रहा था रास्ता. वहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ था और हमारी स्कूटी उसमें गिर गई. मुझे हंसते हंसते She peed her pants. I couldn't breathe because मेरी स्कूटी गड्ढे में थी. हम गड्ढे के बाहर और मेरा दोस्त स्कूटी को धक्का लेके वो गड्ढे से बाहर निकाला था. So I think जब भी मुझसे कोई पूछता है what's my funniest moment, मुझे वो चीज़ बहुत जल्दी. So I have a lot of funny moments from my school. One of them being I was in class 9 and like मैं बहुत talkative थी यार. I'm an extremely extroverted person. I was sitting on the first bench and मैं अकेले बैठी थी first bench पे. English period था and एकदम like first bench first row पे बैठी थी. ठीक है, English period था. मैम थर्ड और फोर्थ रो के सामने पढ़ा रही थी एंड भाई मैं एकदम अकेले बैठी थी. मेरी पार्टनर नहीं थी. मैं पीछे वाले से बात कर रही हूँ. बोल रही हूँ बहुत बड़ी चुड़ैल है ये और पीछे दोनों मेरे फ्रेंड्स बैठे थे. मैम ने देखा मुझे बात करते, खड़ा कर दिया. स्टैंड अप करते बोली व्हाट वर यू सेइंग. शी डिड नॉट हियर मी व्हाट आई वाज सेइंग बट उसने पूछा तो मेरे को हंसी आने लगी एंड फिर उसने मेरे पीछे वाली को भी खड़ा कर दिया जिससे मैं बोल रही थी क्या बात कर रहे थे व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट. वो पीछे वाली मेरे कान में धीरे से बोल रही मैम ये आपको चुड़ैल कह रही थी. मैम बहुत बड़ी डाय. ऐसे तो मेरे स्कूल में बहुत सारे बहुत बड़ा. मुझे प्रिंसिपल ने मेरा किसी बात के बाद कान पकड़ के खड़ा करवा दिया था एंड शी वाज कमिंग एंड आई वाज स्माइलिंग. So the most romantic thing that you have done for someone? That I baked cake for somebody on their birthday and I think that's the most romantic thing I did because I never baked something or cooked something for anyone. That was the first time I did that and I think वो materialistic thing नहीं थी. It was very like straight from my heart and वो अच्छा भी बन गया था यार. like बहुत सबसे first time मैंने ट्राई किया था मुझे मतलब लगा नहीं था that it will turn out so yummy but it was. So the romantic thing I have done is that one time मेरी flight की वजह से flight delay थी उसकी वजह से my train got missed and I was coming home for the first time ever since I went to Mumbai to surprise my family and no one knew that I'm coming. So मेरी flight की वजह से train छूट गई and I had to travel in general class का डिब्बा next to the toilet. I was sitting next to the toilet with my bags just because I wanted to surprise someone. And in my case, I'm the kind of person who will be like, oh my gosh, general डिब्बा now. But I had to because मेरे घर में भी बात किसी को नहीं पता है. But मैंने वहाँ पे बैठ के पूरा 6-7 घंटे ट्रैवल किया था because I wanted to surprise and इससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ हो नहीं सकता है भाई. बाथरूम के डिब्बे के I travel by flights but so बाथरूम का डिब्बा. Where is your favorite go-to place in Gorakhpur? Where I can meet you by any chance. भाई अगर ये मेरे भगवान की कृपा है स्पेशल चाइल्ड हो समझ लो. फिर बाहर नहीं जाती. पहले था नौका था जब बिल्कुल ही वो खंडर वंडर था. बहुत अच्छी हवाएं चलती थी. वहाँ पे लोग नहीं थे, प्रदूषण नहीं था वहाँ पे. बट अब वहाँ पे लोगों ने प्रदूषित कर दिया. अब मैं तो जाती ही नहीं हूँ खैर कहीं. मैं गोरखपुर में अपने घर ही पे रहती हूँ. My go-to place is people like her or few people in my life. It's not place anymore. Well, my go-to place is बंद हो गया. बंद हो गया.
Megranjani, that's No one. सब सारे दोगले हैं बहन जो। Megranjani. Which course did Navya do? Oh. साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। दिमाग ऐसे भम से जिस बात में काम से काम। No worries. So I'm doing marketing. I'm in my second year. What's the biggest fear question? What's your biggest fear question? My biggest fear is getting married and go to a totally new family. Leaving my family is my biggest fear because I really love my family. Girls can relate. So my biggest fear remains कि मैं दुनिया ना देख पाऊँ and I'm stuck at one place and मेरे सपने पूरे ना हो भाई. Like the one thing that I want to achieve in life, वो achieve now. That's my biggest fear and it's not a guy or कोई बंदा बंदी नहीं है भाई. Option ही नहीं. The skill that you always want to learn. Playing guitar, but I couldn't. I bought it in 2020, lockdown के time पे. Still can't play a single chord. Well, I usually go and I learn it because life is too short and I don't know मेरे पास आगे time रहे या ना रहे. So best experience of your life. Best experience of my life when I bought shoes for my father from my first salary, and the smile on his face and he politely said thank you. He couldn't express so much. वो भी expressive नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, but still. I honestly don't have ऐसा कोई पर्टिकुलर मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड भाई मैं पक्षपात नहीं करती हूँ, पार्शियलिटी नहीं करती हूँ. सो आई वुड से माय रीसेंट बेस्ट एक्सपीरियंस वाज गोइंग टू एड शेरन. अब मुझे पता है वो दिल दे जितना मेरी लड़की से कंपेयर करूँगी, बट व्हाइल ही वाज सिंगिंग परफेक्ट इट वाज वेरी 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 नाइस. आई डिड नॉट क्राई दो. Are Gorakhpur people really conservative? Wear shorts and go out in public, you'll see. Wear anything and go out in public. Yeah, we don't know Navya, but how do you want to impress people around you? Don't do drugs, don't vape, don't smoke. But ये सब करने के बाद भी तुम करोगे, मुझे पता है ऐसा कोई फायदा है नहीं, तो ये सब क्वेश्चंस मत पूछो. So your positivity, I think that attracts a lot. I talk to her and मैं पहले भी इसे मतलब आगे मैंने कंटिन्यू इसलिए करा इससे मिलने. भाई मैं कुछ छोटा शरीर हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ. She is very positive and she is very true to herself, and that's the thing you like about somebody. When I'm very straightforward. How do you manage negativity on social media? I block them. Story ever talks bad about me, I block them. I do not entertain haters. मैं तो डायरेक्ट स्टोरी लगा देती हूँ that भाई मतलब if I get a comment, a guy trying to put me down, I put it on my story. No, I let people ruin my mental health for 24 years. Now what I do is I simply block them. If you don't like me, don't follow me. And if you don't unfollow me, No, I will block you. if a guy tries to put me down by abusing me or commenting about my character, I absolutely call them out because कि तुम लोग माँ बहन के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? So that's how I deal with it. How do you take? What's your take on feminism and how do you perceive it? Is it a good thing or bad thing? It's been misunderstood by people and a lot of girls have been taking advantage, like गलत advantage लेती हैं. So since past few years, feminism has only become about women rights. It should be about women rights, but a lot of women have been exploiting it recently. If you might have seen the Atul Wala case. For the alimony that guy had to commit suicide because he couldn't provide. And I honestly think that हाँ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे men have been dominant. So I think वहाँ पे girls should be standing up instead of standing out कि अपने मतलब से होता है. Selfish. Yeah, we don't support that. We don't support that or we don't perceive it. Yeah. If you both and your partners are earning but it doesn't help around with household chores, would it be fine? No, Sorry. no. Actually, I have a mom who is a full-time mom and a dad who works, and yet वो घर के थोड़े बहुत काम करते हैं, cleaning and everything. Even though he works full-time, my mom doesn't. I think I'll discuss it before marriage that if we both are earning. It shouldn't be discussed. It's ऐसा कि हाँ, you both have to do it. But I think the guy I'm gonna marry will do that. नहीं, इसको घर के काम is a basic human skill and a survival skill. Everyone should know it. That's what I tell my brother. So I think that's all. That's all, guys. खत्म हो गए questions. Space से पहले questions खत्म हो गए. That's all, guys, for this video. And if you like our video, like, share, subscribe. मेरा चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं डालेंगे मैं आगे इसको कमेंट में डाल दूंगी, वहां से कर लेना आप अगर नहीं मिलेगा तो. So guys, please हमें बहुत सारा प्यार देना.
that's our first Q&A together. And अगर इस पे 10K hit होता I had to we'll drive come back with another 15 Q&A. kilometers